Welcome back guys. Welcome guys to my YouTube channel The Americo Phantom. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता क्या है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, म्यूकोक्यूटेनस डिसीज है जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता क्या है? ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, म्यूकोक्यूटेनस डिसीज है जो कि हमेशा ड्रग रिलेटेड होती है. स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज अ रेयर, acute and life threatening mucocutaneous disease with systemic involvement and is mainly always drug related. अब देखेंगे हम एसजीएस होता है यानी कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता क्या है. एसजीएस जो है एक माइनर फॉर्म है टीईएन यानी कि टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस का, जिसके अंदर 10% बॉडी सरफेस एरिया डिटैचमेंट होता है. वहीं अगर हम देखेंगे टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस के अंदर, जिसके अंदर बॉडी सरफेस एरिया का डिटैचमेंट 30% होता है. एसजीएस इज अ माइनर फॉर्म ऑफ टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस with less than 10% body surface area detachment, and in toxic epidermal necrolysis detachment is of more than 30% body surface area. Now the next one is clinical features of Stevens-Johnson syndrome. अब क्यूटेनिस इनिशियल फेज के अंदर क्या होगा ना, एक इरिथ्रेमेटस डस्की रेड हमको मैक्यूल्स देखने मिलेंगे, साथ ही साथ उसी तरह के सिमेट्रिकल जो लेशंस होंगे वो फेस, ट्रंक, प्रॉक्सिमल पार्ट और साथ ही साथ पूरे एंटायर बॉडी के ऊपर भी स्प्रेड हो जाएंगे. Erythematous dusky red flat atypical targeted macules are seen and symmetrical lesions distributed on the face, trunk, proximal part of limbs, and it can be spread to entire body. क्यूटेनियस लेशंस के लेटर फेज के अंदर क्या होगा ना, जो लेशंस होंगे वो इवॉल्व हो जाएंगे फ्लासिड ब्लिस्टर्स के अंदर, और इसमें हमको डिटैचमेंट ऑफ एपिडर्मिस भी देखने मिलेगा. लेशन प्रोग्रेसिवली कोएल्स एंड इवॉल्व इनटू फ्लासिड ब्लिस्टर्स एंड डिटैचमेंट ऑफ एपिडर्मिस. द नेक्स्ट वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन. अब म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हमको क्लिनिकल फीचर्स कहाँ का देखने मिलेंगे. फर्स्ट वन इज ऑक्यूलर. इन ऑक्यूलर देयर इज अ एडिमा ऑफ आईलिड, रेडनेस, फोटोफोबिया, डिस्चार्ज, लैक्रिमेशन एंड कॉर्नियल स्कारिंग. And in buccal we will see erosive hemorrhagic lesions, grayish white pseudomembranes and crust on lips. And in genital we will see erosive hemorrhagic lesions and painful urination. Now we will see clinical features of Stevens-Johnson syndrome in extracutaneous lesions. There is non-specific, which is fever, pain, weakness. In respiratory there is respiratory distress. In gastrointestinal there is diarrhea, nausea, malabsorption, perforation of colon, and in renal there is proteinuria, hematuria and microalbuminuria. Now for the next part, which is treatment of Stevens-Johnson syndrome. For the treatment of SJS, we have to maintain the fluid and electrolyte balance. We have to manage oral mucosal lesions with mouthwashes. Topical anesthetic may reduce the pain and allow the patient to take in fluid, and systemic corticosteroid is contraindicated. That's all for today guys. You will see the note in next slide.